प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो प्रकार के होते हैं. ओके, फर्स्ट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड इज कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज. इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज एंड व्हाट इज लो लेवल लैंग्वेज, एंड हाउ पाइथन इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज. ये सारे बातें आप सीखेंगे इस वीडियो में कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज. So what is programming language? By the way, programming language is a language to develop the application. Okay, in nutshell. What are the different types of programming language? There are two category. Okay, दो parts होते हैं programming language के. First is called a low level programming language, and second is called high level programming language. Okay, there are two types of programming language. If I ask if we categorize the languages in two parts, low level and high level, दो तरह के language होते हैं. ठीक है. लो लेवल क्या होता है कि सी योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी. ठीक है, मान लो कि आपका जो लैपटॉप है, जो कंप्यूटर है, से दिस इज योर कंप्यूटर. ओके, so this computer, let's suppose if you want to perform any task in your computer, in your laptop, then this unfortunately this computer understand only binary language. I'm not going to talk about what is binary क्या होता है. It's a kind of number system होता है, binary. So 1 0. everything is written either in 0 or 1. Okay, so computer only दो ही चीज समझता है, या तो it understand 0 या it understand 1. इसको bits बोलते हैं. This is called bits. Okay, so either 0 समझ सकता है या तो 1 समझ सकता है. ठीक है, अगर let's suppose I want to add 5 plus 6 in computer, in your machine. Okay, so your computer or your laptop does not understand 5 and 6. वो 5 और 6 समझता नहीं है. 5 and 6 are the these are decimal number, and this is we human as a human will understand 5 and 6. This is decimal number. So computer को काम करने के लिए, in order to operate, in order to add these two numbers 5 and 6, this computer we have to convert 5, which is in decimal number, into binary number. Binary. मतलब 5 को मुझे 0 0 1 1 मतलब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक समथिंग. ठीक है, और 6 को भी मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लाइक समथिंग समथिंग 1 1, या तो 0 में ऐसा हो सकता है. ठीक है, अगर 5 का नंबर देखो कि 5 बाइनरी ऑफ 5, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो 5 विल बी 101. ठीक है, इसको बाइनरी में से रिप्रेजेंट करते हैं. सो देयर इज अ बाइनरी नंबर. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट्स नॉट एजेंडा. सो इन नटसेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट योर कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी, ओनली बिट्स 0 1 0 1 0 1, वही समझता है. ठीक है, but as a human, we are not comfortable in binary. Basically binary is for computer. Okay, and for human we understand decimal number from our childhood, like 5 6. So low level language are called machine language. उसको machine language भी बोलते हैं. We call it machine language और binary language और assembly language. ठीक है, तो इन सब लैंग्वेज में क्या होता है, we deal with only bits. ठीक है, machine language और assembly language बहुत सारे लैंग्वेज होते हैं. So we only write all the language, all the code in bits, in binary format, 0 1 0 1, जो computer समझता है, which is useful by computer. Okay, so the problem यहाँ पर क्या होता है, let's suppose in case of low level language, the problem is that as a human we are not comfortable. Okay, if you ask you to write everything, आपका जो भी text है, ठीक है, सभी को आप binary में convert करो, 0 1 0 1 में convert करो. So it's pretty confusing. तो आपको उसको logically आपको समझ में नहीं आएगा. Though computer can understand 0 1, but as a human we are not so much smart or so much capable of understanding 0 1 0 1. We are not comfortable in 0 1 0 1 in machine language. Okay, but there are languages which exist in low language, which is called machine language or assembly language, जो 0 1 में deal करता है. Okay, so we are not comfortable with that, और उसको maintain करना बहुत difficult होता है. Let's suppose you written a program in machine language or assembly language. मान लो उसमें 10 फाइल्स है और 100 फाइल्स है, राइट, उनको मैनेज करना है.
it's pretty difficult as a human, as a programmer. It's pretty difficult to manage those code which are written in bits 0101 और assembly language. उनको difficult होता है उनको डिबग करना। मान लो किसी कोड में कोई प्रॉब्लम्स है, कहीं लूप होल है, कहीं ड्रॉबैक्स है, राइट? तो उनको डिबग करना, उनको आइडेंटिफाई करना कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पर क्या लीक हो रहा है उस लैंग्वेज में, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर वो सब कुछ मशीन लैंग्वेज में है, 010 लैंग्वेज में है, ब्रिट्स में है, सो एज अ ह्यूमन इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब कि आपका 90% टाइम जो जो होगा, आपको मेन काम क्या करना, आपको यू हैव टू परफॉर्म सम टास्क, ठीक है, एज अ फ्रॉम द लैंग्वेज, फ्रॉम एप्लीकेशन, योर टास्क इज टू परफॉर्म सम टास्क। लेकिन अगर आप लैंग्वेज में, अगर आप यू आर डीलिंग विद असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, देन आपका 90% टास्क, 90% टाइम विल कंज्यूम इन जस्ट मैनेजिंग द एप्लीकेशन, उसको समझने में, उसको मैनेज करने में, उसको डिफेक्ट को फिक्स करने में, उसमें कुछ भी लूप होल है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसको फिक्स करने में आपका 90% काम उसी में चला जाएगा, 90% टाइम आपका उसी में चल जाएगा टू फिक्स दोज एरर्स। Okay, so that's why low level language we don't prefer. Okay, as a humans, as a programmer, we don't prefer low level language, we don't prefer 0101, because there are a lot of loopholes, lot of challenges are there. So mitigate those problems, उनको overcome करने के लिए we develop high level programming language. Okay, and which is the interest which we are going to talk about. So we are not going to talk about low level language, वो exist करता है, just you have to know that there is a low level of language, low level programming language like machine language and assembly language. I'm not going to talk about it in details. उनका मेन काम क्या होता है, they deal with 0101 bits, वो बाइनरी में काम करते हैं, and it's pretty difficult to manage them. Okay, so but we are going to talk about high level language. Okay, ये language जो हम लोग समझ सकते हैं, this is for human basically. Okay, so आपने सुना होगा the language like C, C++, C Sharp, Java, Python, JavaScript, PHP, ऐसे so many, there are Ruby, Rail, there are so many languages. Okay, so these all are called high level language. Okay, why we call high level language? Because as a programmer we don't deal in the 0 and 1, हम लोग उसमें लो लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में डील नहीं करते, हम लोग 0101 नहीं लिखते हैं in case of high level programming language. So in case of high level language we deal with just like a English, जो हम लोगों को इंग्लिश समझ में आती है, which is pretty useful, और we as a human we are very comfortable in Hindi, sorry, in English language, in English syntax language. So high level language they provide you syntax like English जैसा syntax होता है, उस टाइप का आपको syntax देता है, okay, to write a program. Okay, so it is as compared to low level language, high level language is pretty easy to understand, pretty easy to comprehend as a human being, as a human, and it's pretty easy to write the code, because वो English टाइप का syntax होता है, तो उसको समझने में, उसको लिखने में आसानी होता है। अगर आप उसको 01 में लिखोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर उसको आप लैंग्वेज में लिखोगे, उसको इंग्लिश में लिखोगे, तो थोड़ा सो इजी होता है उसको समझने में। तो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग समझने में इजी होता है, उनका सिंटेक्स इज काइंड ऑफ इंग्लिश टाइप का सिंटेक्स होता है, एंड it is and any human beings can understand that language. Okay,